हाय गाइस। आज हम लोग पुरी जा रहे हैं, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा जा रहे हैं। उसके लिए हमने हमारा जो फ़्लाइट है वो 5 बजे का है, लेकिन हमें 3 घंटा पहले उधर पहुंचना है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट का जर्नी है, तो चेक इन के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 घंटा पहले उधर पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो लगेज तो हमारा सब पैक हो चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं लगेज। अभी हम इधर से कैब बुक करेंगे एयरपोर्ट जाने के लिए, तो कैब बुकिंग हो चुका है, कैब थोड़ी देर में आने वाले हैं। जाते टाइम रास्ते में भी बात करेंगे, तो चलिए। फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं, हम सोसाइटी में नीचे है। अभी कैब आने में थोड़ा 5-10 मिनट और जाएगा। कैब आते ही हम आपको रास्ते पे दिखाते हैं। चलिए बाय। हम कैब में बैठ गए हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं।
हम लोग लैंड कर चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। मेरा हालत बहुत ख़राब लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ा फ्लाइट पे, इसीलिए। हमने लगेज को ले लिया है, अभी हमें बाहर जाना है एयरपोर्ट से और उधर से हमें कैब बुक करके फिर हमें रिसोर्ट तक जाना है। हम लोग कैब में तो बैठ गए हैं। भुवनेश्वर सिटी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। छोटा सा एक सिटी है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हम होटल जा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल का जो रिसोर्ट का जो डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर है। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल मैं आपको मेरा होटल टूर दिखाऊंगी। बाय।